everyone. Now in our structure, today we are going to see our remaining example of bending stress in a beam. Now before we going to see our next example, in a previous video we saw some example of bending stress in a beam, then equation of bending stress and moment of resistance for different type of beam. So first of all, what is the equation of bending stress? So it is m by I is equal to f by y is equal to E by R, where m equal to moment of resistance or bending moment, I equal to moment of inertia about x-axis, f equal to bending stress, y equal to neutral axis થી દૂરના છેડાનું અંતર, E equal to modulus of elasticity, R equal to radius of curvature of beam. Now here some maximum bending moment यानी कि moment of resistance. So maximum bending moment or moment of resistance for a simple beam is given below. So it is for simply supported beam with a central point load m is equal to WL by 4. Simply supported beam with eccentric point load is equal to m equal WAB by L. Simply supported beam with UDL on entire span, so it is WL square by 8. Cantilever beam with a point load at a free end, it is W into L. Then cantilever beam with UDL on entire span, it is WL square by 2. So it is the moment of resistance of beam with a different type of load acting on it. Now next example is ચોરસ આડછેડ અને 2 મીટરનો ગાળો ધરાવતા એક બહુધારણ પાતળા પર 28 કિલોન્યુટન મીટરનો સમવિપરીત ભાર લાગે છે. તો માન્ય નમન પ્રતિબળની કિંમત 7 ન્યૂટન mm સ્ક્વેર છે. તો ચોરસ પાતળાની બાજુ નક્કી કરો. તો ગિવન એક્ઝામ્પલ ઇઝ કેન્ટિલીવર બીમ. સો ફર્स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग गिवन डेटा वी ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. ठीक है, जो गिवन बीम दिया है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे. बी इन डी लंब चौरस यानी कि स्क्वायर, देन बहुधारण पातड़ा यानी कि कैंटिलीवर बीम, समविपरीत भार એટલે કે UDL लोड एक्ट हो रहा है, इट इज़ 28 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, માન્ય નમન પ્રતિબળની કિંમત બરાબર એફની વેલ્યુ આપણને આપી દીધી છે, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, સાઇડ ઓફ ધ બીમ. ठीक है, so first of all given data we have L is equal to 2 meter, F is equal to 7 Newton per mm square. So we have F is equal to 7 Newton per mm square. Now cantilever beam with UDL, cantilever beam with UDL length is equal to 2 meter. Then UDL is 28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M कैसे फाइंड करेंगे. सो कैंटिलीवर बीम विथ UDL ऑन एंटायर स्पान, सो इट इज़ फाइंड आउट बाय WL स्क्वायर बाय 2. तो वी हैव W L, so we get the moment of resistance. So M is equal to WL square by 2. W is equal to 28, L is equal to 2000 square divided by 2. So it is M is equal to 56 multiplied by 10 raised to 6 Newton into mm. We have M, value of M, we have F, value of F, and also we have value of Y. Y कैसे फाइंड करेंगे. सो इट इज़ B by D. Y is equal to B by D. ठीक है, सो इट इज़ 0.5 B जो हमें साइड फाइंड करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that equation of bending stress m by I equal to f by y. We have value of m, also we have value of f. now हम I कैसे फाइंड करेंगे. I is equal to moment of inertia, so it is standard square section, so it is BD cube by 12, but D is equal to B, so B into B cube by 12, so B raised to 4 by 12. So 1/12 raised to 1/12 into B raised to 4. तो हमें I की वैल्यू मिल गई, Y की वैल्यू है F and M. Put all the value of this equation M by I is equal to F by Y. M is equal to 56 10 raised to 6,
divided by mi is equal to 0.0833 b raised to 4 is equal to 7 upon 0.5 b. So it is 48.02 10 raised to 6 is equal to b cube. तो b cube b is equal to 363.5 mm. ठीक है, b हमें मिल गया है, स्क्वायर सेक्शन है, सो ऑल द साइड आर इक्वल, सो 363.5 mm. ये हमें क्रॉस सेक्शन मिल गया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक लंबचौरस આર્ચેડ 5 મીટર લંબાઈના સાદા ટેકવેલ બીમ માટે ઉપયોગમાં લીધેલ છે. બીમ તેની પૂરેપૂરી લંબાઈ પર 50 કિલોન્યુટન મીટરનો સંવિપરીત ભાર તેમજ તેની લંબાઈની મધ્યમાં 10 કિલોન્યુટનનો બિંદુ ભાર વહન કરે છે. જો બીમની મહત્તમ નમન પ્રતિબળની કિંમત 250 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેરથી વધતી ના હોય તો બીમની ઊંડાઈ અને પહોળાઈ શોધો. બીમની ઊંડાઈ તેની પહોળાઈ કરતાં બમણી છે. બરાબર, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ एग्जाम्पल एंड वेरी इजी एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम क्या क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे. एक लंबचौरस આર્ચેડ, બરાબર, આર્ચેડ કેવું છે? લંબચોરસ. 5 મીટર લંબાઈના સાદા ટેકવેલ બીમ, સિમ્પલી સપોર્ટેડ, સાદી રીતે ટેકવેલ એટલે કે સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ ઉપયોગમાં લીધેલ છે. બીમ પર તેની પૂરેપૂરી લંબાઈ પર 50 કિલોન્યુટન મીટરનો સંવિપરીત ભાર, બરાબર, સંવિપરીત એટલે કે યુડીએલ. યુડીએલ કેટલો લાગે છે? 50 કિલોન્યુટન પર મીટર. તેની લંબાઈની મધ્યમાં 100 કિલોન્યુટનનો બિંદુ ભાર, બરાબર, મધ્યમાં કેટલો ભાર લાગે છે? 100 કિલોન્યુટનનો બિંદુ ભાર લાગે છે. 100 કિલોન્યુટનનો બિંદુ ભાર વહન કરે. જો બીમમાં મહત્તમ નમન પ્રતિબળની કિંમત 250 ન્યૂટન પર mm, બરાબર, એફની વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ છે 250 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. તો બીમની ઊંડાઈ એટલે કે ડેપ્થ ડી અને બ્રેથ બી અને ડેપ્થ ફાઇન કરવાની છે. બીમની ઊંડાઈ એટલે કે એની ડેપ્થ છે એ બ્રીથથી 2 ગણી છે, એટલે ડી ઇક્વલ ટુ ટ્વાઇસ ઇન્ટુ બી, ડેપ્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ બ્રીથ, બરાબર છે. બીમની લંબાઈ આપણને આપી દીધી છે 5 મીટર, બરાબર. પોઈન્ટ લોડ સેન્ટરમાં લાગે છે તો ધી ડિસ્ટન્સ ઇઝ 2.5, ઇટ ઇઝ એ ઇન્ટુ એ એન્ડ બી. So this is the given data of the given example. Now we have know that bending equation m by I is equal to f by y. f की वैल्यू है हमारे पास, m हमें फाइंड करना पड़ेगा, i हमें फाइंड करना पड़ेगा, y हमें फाइंड करना पड़ेगा. y कैसे फाइंड करेंगे? सो इट इज़ d by 2, d by 2. Now i कैसे फाइंड करेंगे? स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन, सो i इज इक्वल टू BD क्यूब बाई 12. m हम फाइंड करेंगे फॉर अ मोमेंट रेजिस्टेंस. हियर टू लोड एक्टिंग ऑन द बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL एंड ऑल्सो पॉइंट लोड. तो UDL के लिए क्या, सॉरी, पॉइंट लोड के क्या होगा? WL/4 एंड UDL के लिए WL²/8. ठीक है. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड इज इक्वल टू WL/4 and UDL WL²/8. So put all the value in this equation. We have W is equal to 100 into 5 divided by 4. For UDL 50 into 5 square divided by 8. Simplified it, so we get the m is equal to 281.25 10 raised to 6. m की वैल्यू हमें मिल जाएगी. Then d is equal to 2b is given, so I is equal to BD cube by standard rectangular section, so it is I equal to BD cube by 12. b we have d is equal to twice b cube. ठीक है, तो 2b into twice b cube upon 12, so it is 0.677 b raised to 4. y is equal to d by 2, y is equal to d by 2 is equal to twice b by 2, so y is equal to b. ये हमें मिल गया ना. बेंडिंग इक्वेशन m बाई आई इज इक्वल टू f बाई वाई. m की वैल्यू है, i की वैल्यू है, f की वैल्यू है, y की वैल्यू है, सो हमें ऑब्वियसली b मिल जाएगा. ठीक है. सो m इज इक्वल टू 281.25 10 raised to 6 डिवाइडेड बाई 0.67 b raised to 4 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई b. सिंप्लीफाइड करेंगे, सो वी गेट b क्यूब इज इक्वल टू 1679104.47. बी बी कैंसिल हो जाएगा, सो बी 4 की जगह बी क्यूब. सो बी की वैल्यू हमें मिल गई 118.85. नाउ वी हैव डी इज इक्वल टू ट्वाइस बी. ब्रेथ एंड डेप्थ फाइंड करना है, तो डेप्थ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रीथ.
2 इंटू 118.85, so D is equal to 237.71. so here depth is equal to क्या आएगी बीम की 237.71 and breadth is equal to 118.85. so 118.85 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 237.71. so in this way we can find depth and breadth of given beam cross section by using bending equation. Now next example is કે એક લાકડાનો બીમ 200 mm પહોળો અને 300 mm ઊંડો બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણને ક્રોસ સેક્શન ઇઝ ગિવન પહોળો यानी કે ब्रेथ કેટલી છે 200 mm 200 mm ડેપ્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 300 mm ઇઝ ગિવન બરાબર છે. ઊંડો 4 મીટરના ગાળા ઉપર સાડી રીતે ટેકવેલ यानी કે સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ છે બરાબર છે. ગાળો કેટલો છે 4 મીટર એટલે લેન્થ ઓફ ધ બીમ ઇઝ 4 મીટર. जो बीमनी नमन प्रतिबळ यानी कि F इज इक्वल टू 8 न्यूटन पर mm². वधे नहीं ते रीते बीम में वधु वधो केटलो संविपरीत भार यानी कि UDL बराबर. आपणे शुं फाइंड करवानुं छे इन दिस गिवन एग्जाम्पल वी फाइंड W, हाउ मच लोड एक्टिंग इन दिस बीम पे कितना लोड आएगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो नाउ वी आर यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन M/I इज इक्वल टू F/Y. ठीक है. सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL. सो वी हैव इक्वेशन फॉर दैट WL²/8. अप्लाई करेंगे वी हैव 4, L इज इक्वल टू 4. देन F हमें गिवन है F इज इक्वल टू 8 न्यूटन mm². स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन I इज इक्वल टू BD³/12. वी हैव वैल्यू ऑफ B ऑल्सो D. सो 200 मल्टीप्लाई बाई 300 क्यूब डिवाइडेड बाई 12. सो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी. वी हैव ऑल्सो वैल्यू ऑफ Y इज इक्वल टू D/2. D इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 150. Y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो M इज इक्वल टू बेंडिंग इक्वेशन M इज इक्वल टू M/Y इक्वल टू F/Y. सो M इज इक्वल टू I इंटू F/Y. वी हैव वैल्यू ऑफ I, we have value of F and also D. Y. So I is equal to 45 10⁻⁷ multiply F equal to 8 divided by 150. So M is equal to 24 10⁶. Now for simply supported beam with UDL, M is equal to moment of resistance is equal to WL²/8. W की वैल्यू M की वैल्यू है हमारे पास 24 10⁶ इज इक्वल टू W हमें फाइंड करना है W इंटू 4000² डिवाइडेड बाई 8. 4000 कैसे आया 4 मीटर कन्वर्टेड इंटू mm. सो 4 मीटर इज इक्वल टू 4000 mm² डिवाइडेड बाई 8. सो इट इज़ 12 न्यूटन पर mm. W इज इक्वल टू 12 न्यूटन पर 8, 12 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड लोड एक्टिंग ऑन दी बीम. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आकृति में दर्शावेला सादा टेकवेल बीम माटे जो महत्तम नमन प्रतिबळ 250. सो F इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm². तो बीम द्वारा पूरी लंबाई पर लादी सकातो समर्पित भार शोधो. सेम एग्जाम्पल जो प्रीवियस एग्जाम से सेम एग्जाम्पल. ठीक है. आपको फिगर दी गई है. ठीक है. सिंपली सपोर्टेड बीम L इक्वल टू 6 मीटर. W हमें फाइंड करना है. क्रॉस सेक्शन दिया गया है 40 mm बाई 40 mm. I is equal to circular section, so it is π/64 d⁻⁴. I is equal to circular section, so π/64 d⁻⁴. ठीक है. इन सर्कुलर सेक्शन देर आर रेक्टेंगुलर सेक्शन. तो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मोमेंट फाइंड करने के लिए जो सर्कुलर सेक्शन है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन. सो इट इज़ BD³/12. सो B एंड डेप्थ की वैल्यू है 40/40³ डिवाइडेड बाई 12. सो इट इज़ I इक्वल टू 469.10⁶ mm⁴. Y हमें मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 12. डायमीटर दिया गया है सर्कुलर सेक्शन का इट इज़ 100. सो Y इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई इट इज़ 50 mm.
we have value of F 250 Newton per mm square, L is equal to 6 meters, so it is 6000 mm. So this is the given data. So in this given data we can find moment of inertia Y and L. Now we know the bending equation, m by I equal to F by Y, m equal to I into F by Y. So I equal to 469.5 10 to 6 into 250 divided by 50. So m equal to 23.475 10 to 6 Newton into mm. Now simply supported beam with UDL on it. So moment of resistance m equal to WL square by 8. We have value of m. W हमें फाइंड करना है. L is equal to 6000 square divided by 8. So W is equal to 5.216 Newton per mm. So W equal to 5.216 kilonewton into meter. So in this way we can find load acting on the beam.